create irrigation potential of 3 lakh hectare of the land. Thereafter I talked about Jal Abhiyan program, and 2005 it has been started, and through this Jal Abhiyan program we are doing how many? I said that we are doing the methods, providing methods for groundwater recharge, and then we are doing management. ध्यान है ना, management जो पानी available है, understood? Ground and surface water, management of ground and surface water, management of ground and surface water for the best utilization. और ये जो methods और ये second point management है, कितने गांव में apply करना है? 20,000. And how many infrastructure, rainwatering infrastructure that we have to develop? 1 lakh. ये develop हो जाएगा तो आप समझते हो कि what is the development in the India? It is a good development. Thereafter I talked about there should be he focused on what is a rainwatering, different kind of rainwater harvesting structure. And then it has been also talked about that we should also go for what is an efficient use of water available, that is through the sprinkler irrigation, drip irrigation, and then there should be what judicious use of all type of water available. धीरे धीरे बोलते जाएंगे तो याद हो जाता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं होती है, कंसेप्ट है, फिर धीरे धीरे फैक्ट्स बन जाएगा और कहीं भी आप फटाफट बोलने लग जाओगे. ये क्लियर करने का एग्जाम करने का तरीका होता है. एंड देन इन जुडिशियस एंड इक्विटेबल, मिस जुडिशियस भी हो और इक्विटेबल, सभी लोगों को और सभी को अच्छे से मिले, एवरीवन शुड गेट, एंड देन एंड इकोनॉमिक मैनर. नाउ भारत निर्माण प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2005 itself, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. लेकिन इसमें भारत निर्माण प्रोग्राम लॉन्च इन 2005, तो इट इज आई सेड दैट अलोंग विद रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यदि भारत निर्माण प्रोग्राम मुझे बनाना है इनटू वी हैव टू डू, विदाउट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर कैन नॉट बी पॉसिबल. अंडरस्टूड? सो आई सेड दैट क्योंकि वी हैव टू मेक देम टू एजुकेट एंड ऑल, तो एक चीज से वी हैव टू मेक देम टू व्हाट इज एन स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप. So when the people will be educated, they can understand our program and issues, and they can intelligently involve themselves, and they can understand what is the meaning of water conservation and what is the meaning of, I said that, different structural development and then government programs. So I said that in this Bharat Nirman program, in which rural infrastructure development, the 7 major areas in the different parts of the country, in the MP, in the I said that in the UP, Bihar and Odisha, Maharashtra, in these regions and all, and it has been found that some 7 major areas they have covered, and in those 7 major areas में इन्होंने क्या करना था? I said that infrastructure gaps जो है उसको हटाया जाए. We have to increase the infrastructure gaps, and then I said that that is in a rural roads infrastructure we have to provide. Then there is I said the rural housing, उनको घर बोला जाए, जैसे इंदिरा गांधी आवास योजना was there earlier also. And then the rural water supply, पानी उन्हें provide करना चाहिए always. We should try to provide then, यदि कैसे भी मिल सके water supply. I am not talking about urban water supply. I am talking about, do not take it, this word is easy word, rural water supply. And then rural electrification. And then rural telecommunication, जो कि आज की डेट में यही सबसे ज्यादा है. रूरल टेलीकम्युनिकेशन, एवरीवन हैज अ टेलीफोन. ये प्राइवेट कंपनी हर जगह पहुंचकर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके लो भाई फोन यूज करो. दिस प्राइवेट कंपनीज इन दिस सेक्टर दे आर वर्किंग हार्डर, बट वेयर इट इज रिक्वायर्ड, यदि एजुकेशन में बोला जाए, प्राइवेट कंपनीज आर नॉट कमिंग एंड देन गेटिंग इनटू द रूरल एरियाज, क्योंकि पढ़ाई के लिए कौन पैसा इन्वेस्ट. लेकिन एवरीबडी इज व्हाट, एवरी मंथ आई नीड रिचार्ज, 50 रुपए 100 रुपए, everybody will do in the rural, yes or not, or they need to talk. तो वहां पे तो करेंगे, तो प्राइवेट कंपनी जानते हैं कि where they can, what is invest. So यदि if it is there तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन यही है थोड़ा सा भी there is some constraints. The government is asking to come and do some your investment in this area. लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, कभी भी कोई भी प्राइवेट कंपनीज अपने फायदे के लिए इन्वेस्ट करता है, वो हमेशा there is some kind of I said that social cooperation वाली बात होती है, लेकिन उतनी नहीं होती है. अब जैसे हम लोगों ने फ्री मिल्क डे स्टार्ट किया लास्ट ईयर, इट इज डन बाय द कैपिटलिस्ट एंड अलोंग विद द NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड. तो उन्होंने भी स्टार्ट किया कि फ्री मिल्क दिया जाए. किसको दिया जाए? बच्चों को दिया जाए. एंड देन
These are the things which has been started. Lekin it is in a cooperative. It is in a kind of cooperative societies in which the people, not only the capitalists are there, there is others are also there which are involved in then giving it. तो हमने देखा कि I said that कि हमें ये rural roads, rural housing, rural electrification, rural water supply and then rural I said telecommunication connectivity, ये सारे पे हम लोग काम करेंगे एंड धीरे धीरे हम लोग कितना करेंगे, इरिगेशन इस एरिया में कितना बढ़ाएंगे, 10 मिलियन हेक्टेयर ऑफ एडिशनल इरिगेशन. पहले का तो है ही एडिशनल, जो भी वहां पे इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें से 10 मिलियन हेक्टेयर. हाउ मच एरिया इन इंडिया? आई सेड दैट हाउ मच एरिया इन इंडिया विच इज अंडर द इरिगेशन? ओनली 146 मिलियन हेक्टेयर लैंड इज व्हाट अंडर, आई सेड नेट एरिया शोन. कल बताया था ना 45 to 46%. इन दिस एरिया और बात कर रहे हैं कहाँ पर हम लोग 10 मिलियन हेक्टेयर लैंड में इरिगेशन पोटेंशियल. तो do not consider these are the smaller point. I said that Bharat Nirman program which has been launched in 2005 with the rural infrastructure development, and it has been said that in the rural housing, rural roads, rural water supply, rural electrification, rural telecommunication and then education section, ये सारा चीज अच्छा हो जाएगा. Then we'll try to increase the 10 million hectare extra irrigation potential in this region. Understood? जहाँ पे नहीं है और वहाँ पे बढ़ाया जाए, कमी है वहाँ पर. So it is talked about in the 7 major areas it has been taken concern. I talked about, अभी हम लोगों ने आपसे क्या बात किया, simple I have discussed with you that it is a national water supply. I said that policy and then water policy, national water policy at 1987, 2002. Thereafter I talked about there is an, I said the 11th 5-year plan. In the 11th 5-year plan there are so many objectives are there, and in the objectives like we have seen, I said that first objective several major, medium, minor irrigation projects ko बढ़ाया जाए. And one example that we have seen that to create on the Mahi river 3 major example say करना होगा, example like 3 major, 4 medium and then 100+ minor irrigation projects, and through which around 3 lakh hectare of the land will be able to get the what, able to create an irrigation potential. And then आपको ही पता है 3 लाख का मतलब क्या होता है, ये 10 लाख हो जाए तो 1 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा ना. तो एक एक बूंद से बढ़ा जाता है. और भारत निर्माण ने क्या बोला, 10 मिलियन मतलब 100 लाख, 10 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द लैंड का मतलब. तो आई सेड दैट तो हमें अभी छोटे छोटे से वो 3 लाख को 1 मिलियन में कन्वर्ट करना है. तो और हमारे पास कितना लैंड है, 328 मिलियन, और हमें कितना करना है 1 मिलियन की, और उसमें से इरिगेशन एग्रीकल्चर वाला कितना रीजन है 146. So I said that thereafter I talked about that the 11th 5-year plan is talking about 3 major and some 4 medium in the Mahi, and thereafter we talked about which program we talked about, Jal Abhiyan program. And through the Jal Abhiyan program it was targeted, like I said that in the 2005, and the target was, I said, to cover 20,000 villages and 1 lakh what rain water harvesting infrastructure. And in this one they said that you will have to make them to understand the method of groundwater recharge. Second one, I said that management of groundwater as well as surface water utilization. Understood? This is one of the biggest achievement that if it will be there. And then it has been then we have talked about in this 11th 5-year plan is talking about also. तो ये पहले बना था लेकिन 11th 5-year plan में इसको boost देना है. 2005 में बना था, 11th 5-year plan ये 2007 से बढ़ा है, तो इसको boost देना है. Understood? Thereafter I said that there is an increasing the, I said that rainwater harvesting infrastructure, and then we have to also go for I said that better irrigation methods, and so that water conservation can be there, is sprinkler and drip irrigation. And we have seen we should try to teach them judicious, equitable and economic manner use of water. Understood? After that we come on to the program. It is, I said that, Bharat Nirman program. In the Bharat Nirman program we have been able to see, I said that it has been targeting major 7 areas under this 11th 5-year plan.
It is a targeting of how much area? Understood? And they are targeting और 2005 से 2009 तक का ये टारगेट था, इसी को आगे बढ़ाया जा रहा है. और and then I said that in this one the major thing it is, I said that to increase the rural infrastructure. And the rural infrastructure, I said that how much rural infrastructure? It is, I said that what are the rural infrastructure? Rural roads, rural housing, rural water supply, rural electrification, rural communication, rural education system, and this way, and ultimately to achieve the 10 million hectare irrigation potential and capacity. Understood? ये एक आपको मेजर हमने सरफेस वाटर के बारे में समझाया. इससे पहले सरफेस वाटर को हमने बोला कि इंडिया इज मिसमैच ऑफ व्हाट? सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन. इन द नॉर्थ ब्रह्मपुत्र कंप्लीटली मिसमैच, गंगा इज हाफ मिसमैच. सो बिकॉज दिस टू वाटर रिवर इट इज व्हाट 650 ब्रह्मपुत्र एंड दिस इज 550, दोनों को मिला लिए तो कितना हो गया? 1200. So I said that next हम लोग देखने जा रहे हैं अदर प्रोजेक्ट्स. समझ में आ गया? वो याद हो गया. अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट AIBP. I said that accelerated irrigation benefits program. Accelerated irrigation, तो जो ऑलरेडी प्रोग्राम्स चल रहा है AIBP, मैंने यही बोला था कि जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको फास्ट फिनिश करने के लिए AIBP ने बोला आई विल गिव यू लोन. आई विल गिव यू लोन. AIBP एक्सेलरेट करना है, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम. इन 96-97 प्रोवाइड लोन असिस्टेंस टू द स्टेट्स. किसको? सेंट्रल नहीं, सेंट्रल इज प्रोवाइडिंग टू स्टेट्स टू कंप्लीट सम ऑफ द इनकम्प्लीट मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स. क्लियर? जो अभी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है एंड देन उसको एक्सेलरेट किया जाए जल्द से जल्द. एंड देयर आफ्टर इसमें कौन से दो टू प्रोजेक्ट्स देयर इन द 96-97 ओनली मेजर एंड मीडियम. बट बाय 2005 एज आई हैव सेड दैट दे हैव आल्सो इंक्लूडेड माइनर इरिगेशन. दे हैव आल्सो इंक्लूडेड. पहले 96-97 में just 10 years before when they have started AIBP to accelerate the irrigation projects, those who are major and minor, to complete it fast. Therefore, loan assistance has been given. But in 2005, अच्छा इसका progress देखने के बाद they also started doing which one? Minor irrigation projects. Understood? And then minor irrigation schemes of non-special category state with potential of more than 100 hectare. तो जो भी minor irrigation जिसका आसपास के 100 हेक्टेयर लैंड को कवर कर रहा होगा, मोर देन 100 हेक्टेयर लैंड, वो माइनर इरिगेशन स्कीम्स के लिए अगेन स्टार्टेड गिविंग लोन असिस्टेंस. देयर आफ्टर वी कैन बी एबल टू सी फ्रॉम द मार्च 2006. और ये स्पेशली आपको प्रेफरेंस किसमें है? ट्राइबल एंड ड्रॉट प्रोन. ध्यान में रखेंगे, ट्राइबल एंड ड्रॉट प्रोन. जहां पे ट्राइबल एरियाज हैं, ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं. आई एम डिस्कस्ड जब मैं आपको लैंड रिसोर्स आई एम टीचिंग, आई डिस्कस लॉट अबाउट द ट्राइबल एरियाज आल्सो. आई मेड इट राइट आल्सो, क्योंकि उनको बहुत सारा चाहिए. वाटर सप्लाई भी तो उनको चाहिए. दे नीड ऑल्सो वाटर सप्लाई. नहीं तो वो पानी लेने के लिए पता नहीं कहाँ जाते हैं. फॉरेस्ट में रहते हैं बट दे नीड वाटर सप्लाई आल्सो. फ्रॉम मार्च 2006 then I said state government have been provided a grant of that is around 10,000 crore. कभी भी आप ये डाटा ऐसे नहीं याद रखेंगे. अराउंड हमेशा एक अराउंड फिगर बोला करेंगे. अराउंड 10,000 करोड़ AIBP फॉर 200 मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट and for 5,500 minor surface irrigation schemes. Clear? So 10,000 crore, one data that it has been there. एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि गवर्नमेंट ने इतना पैसा दिया है. 2006 के बाद when the minor scheme also included, yes or not? और minor schemes कौन से है? How much? It should be at least 100 hectare of the land. वो इरिगेशन स्कीम कितने हेक्टेयर ऑफ द लैंड को इरिगेशन प्रोवाइड कर रहा हो? At least 100 hectare. एंड देन स्मॉल रिजर्वायर और कैनाल्स बना देते हैं और फ्लड आते समय भी. लेकिन आई सेड दैट ड्रॉट प्रोन एरिया एंड ट्राइबल एरिया के लिए. अंडरस्टूड? सो हाउ मच द गवर्नमेंट हैज इन गिवन लोन इन सिंस 2006? यस, 10,000 crore. फॉर हाउ मेनी मेजर माइनर? 200. हाउ मेनी सॉरी मेजर मीडियम? 200. एंड हाउ मेनी माइनर? 5,500. अंडरस्टूड इट?
So this is the way. So पहला आपको AIBP समझ में आ गया. Next one I said that hydrological information system, HIS. Understood? Hydrological information system, and it has been started in the 9 states with the World Bank assistance. किसके assistance से start किया? Hydrological information means हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड, चाहे रेनफॉल हो चाहे कोई भी हो, कितना पानी कहाँ पे है, ग्राउंड वाटर, एवरीथिंग, एवरी डाटा रिगार्डिंग वाटर, एवरी डाटा रिगार्डिंग वाटर. इसके लिए क्या चाहिए? टेक्निकल टीम. यस, वहां पे कैसा वर्क होना चाहिए? अगेन यू नीड एन टेक्निकल टीम फॉर अनदर लेवल. सो डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निकल टीम you need to find out. I said that to find out water condition, hydrology condition in a particular region. So in the 9 states में क्या किया गया? World Bank has given an assistance to what? Create a hydrological information